Good evening to all. Here I am going to discuss the functions of management. Let's see the functions of management are 5 functions of management. First is planning, another one is organizing, staffing, directing and controlling. Let's see one by one what is planning and what are the functions of planning. Planning means deciding in advance what is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done. Planning का मतलब ये होता है कि डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा उस काम को. प्लानिंग एक जो गैप फिल करता है, आज अपन यहाँ है तो कल फ्यूचर में अपन को कहाँ जाना, उसका जो गैप फिल करता है वो प्लानिंग करता है. प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू दी ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइजेस का, उसको डिफाइन करना, बताना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक मीन्स assumption regarding the future. Planning is forward looking, जो आगे देख के चलता है प्लानिंग हमेशा. Planning involves decision making. Planning involves decision making means to say it is a mental exercise. It involves a number of decisions to be taken. Means to say कि फ्यूचर में कैसा होगा अपन assume तो कर सकते. We cannot predict what is real to be going on. Now coming to the another feature, another function is organizing. Organizing means provide everything to the business which is essential for its functioning, like raw material, capital, personnel and many more things which is required for the functioning of any organization. Now coming to the features of organizing. Organizing means to say identifying and grouping. Identify means according to the nature of a product or a line, the groups, the work should be divided among the different individual. Means works to be divided among the different individual in the smaller task according to the qualification and experience of the individual. Now coming to the departmentalization. Departmentalization means the activity are grouped in the department according to the nature or a job of a particular line of product. Departmentalization can be grouped under the functional departmentalization or can be the divisional departmentalization. Functional means to say it is related to the job and divisional related to the product. Means the job related to the similar nature are grouped under one department. इसका मतलब ये है कि अगर जो जॉब है सिमिलर नेचर की उसको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप्ड किया जाए. फॉर एग्जांपल जो सेल्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में ग्रुप की जाए. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिविजनल, सिंगल लाइन प्रोडक्ट से कोई डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाना चाहता है, जैसे सेल के साथ मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, और जैसे कि कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ टेक्सटाइल या मेडिसिन का प्रोडक्शन भी हो रहा है. तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस जो सारी एक्टिविटी हैं एक ही जो काम भी है ना उनको एक ही साथ डिपार्टमेंट किया जाए, मीन्स एक ही साथ ग्रुप किया जाए. Now coming to the another feature is assignment of duty. Assignment of duty means to say that according to the person skills, capability and the ability of its experience, knowledge, qualification, the work should be assigned. How the work should be assigned means through giving the job descriptions the work should be assigned, or we can say the responsibility should be assigned. Now another feature is establishing the reporting relationship. Establishing the reporting relationship means to say that superior and subordinate relationship, who has to report to whom. Now coming to the staffing. Staffing means right person for the right job. Staffing का मतलब रहता है रिक्रूट करना, people को select करना for the right person for the right job, right qualification at the right time. Now let's see the features of staffing. Means estimating the manpower requirement, means by seeing that वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कफोर्स कितना है और वर्कलोड कितना है उसके हिसाब से रिक्रूट करना पीपल को. इट्स कम्स टू द स्टाफिंग. नाउ and in staffing the one feature is also that recruitment and selection. There are two type of recruitment. One is internal and another one is external. Internal involves the two, transfer and promotion. Transfer means from one place to another without change in job level or the authority level or income. If we are talking about the promotion, means change in the level of job position by change in the income as well as the place. We are talking about the selection. Selection involves the various steps to be performed. Under there is aptitude test. Selection involves various series of steps to be performed. Means plenary, screening, various selection tests are there. We discuss later it.
Now coming to the directing. Directing involves means motivating the people or inducing the people, inspiring, guiding the employees to perform the work in a best possible manner for the achievement of the organizational goal. Now let's see the features of directing. Giving the instructions and order. Instruction and orders किसको देना? Employees को देना. So वो right direction में अपना काम करें. So automatically the organizational object is going to be achieved. Now coming to the motivating the employees means stimulating the employee, inducing the employees जिससे वो अपना अच्छे से अच्छा काम करें. Motivation can be done by the financial and the non-financial institutions. Observing and supervising. Observing and मतलब उनके काम को देखना वो कैसे कर रहे हैं. Supervising means overseeing the work of the employee कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं. टोकना नहीं है उनको, मीन्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं वक्त उसको देखना, मीन्स इट इज़ अ सुपरवाइजिंग. सुपरवाइजिंग इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज स्पेसिफिक डिफरेंट चैप्टर्स वर देयर. प्लानिंग का अलग चैप्टर है, स्टाफिंग का अलग है, ऑर्गेनाइजिंग सारे चैप्टर्स हैं. Now we are simply discussing, not a brief discussion, but simply discussing the term here. Communicating with employee. Communicating with employee means to how to follow the scalar chain or the gang plan. The communicating with the employee. Now coming to the controlling. Controlling means comparison of the past performance with the planned performance. means जो अपन ने प्लानिंग की है और जो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका कंपैरिजन करना, और कोई भी डेविएशन है उसको फाइंड आउट करना है ना. डेविएशन जो भी हैं उसको फाइंड आउट करना और देखना कि जो अपन ने प्लान किया है उसके हिसाब से अपना काम चल रहा है या नहीं. आई होप ऑल इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.